Hello everyone. In today's video, we will discuss common minor discomforts during pregnancy and how to manage them effectively. These are very common issues that most pregnant women experience, but with simple care, they can be easily managed. So let's get started. First of all, introduction. So during pregnancy, a woman's body undergoes many hormonal, physical and emotional changes. और इन changes की वजह से बहुत सारे minor discomforts जो होते हैं वो होते हैं. These are not dangerous, but ये हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं और कंफर्ट को अफेक्ट करते हैं. सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपल मैनेजमेंट टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग well-being. Now let us discuss one of the most common discomforts experienced during pregnancy, that is nausea and vomiting, commonly known as morning sickness. Morning sickness usually begins around 6th week of pregnancy and may continue until the 12th to 14th week. Although some women experience it for a longer period, despite its name, it can occur at any time of the day, not just in the morning. The main cause of morning sickness is the hormonal changes, especially HCG and the estrogen. ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, इन हार्मोन में जो चेंजेस आते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को और ब्रेन के वॉमिटिंग सेंटर को, दैट अल्टीमेटली लीड टू फीलिंग ऑफ नोजिया एंड ओकेजनल वॉमिटिंग. सिम्टम्स इसमें फीलिंग सिक और नोजिएटेड फील करती है मदर, वॉमिटिंग स्पेशली आफ्टर waking up, sensitivity to certain smells or foods, and loss of appetite. Although morning sickness is usually harmless, severe vomiting can lead to dehydration and weight loss, which may require medical attention. So management of morning sickness, several simple measures can help to reduce morning sickness. First one is eat small and frequent meals. Rather than 3 large meals, an empty stomach can worsen nausea. So avoid spicy and fatty foods, as these foods may trigger nausea, so we have to avoid it in pregnancy. Eat dry crackers before getting out of the bed in the morning. This helps to settle down the stomach and reduce the feeling of nausea. Drink fluid between meals, but not in during meals. So instead of during meals, to prevent stomach fullness, we have to drink fluids between the meals. Ginger or vitamin 6, ginger candies or vitamin B6 supplements जो होते हैं, if recommended by the healthcare provider, may help to relieve the nausea. So morning sickness is a normal part of pregnancy caused by hormonal changes, and it can usually managed effectively through dietary modifications and healthy lifestyle practices. Next, let's talk about the fatigue, which means feeling unusually tired or lacking energy. Fatigue is one of the earliest and most common symptom of pregnancy, especially during the first trimester. Many pregnant women feel exhausted even after normal daily activities. अब फटीग होता क्यों है, उसके बहुत सारे रीजंस है. जो इंक्रीज्ड लेवल है हार्मोन का, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, वो बॉडी को रिलैक्स्ड और स्लीपी फील कराता है. एंड द नेक्स्ट वन कॉज इज बॉडी अडेप्टिंग टू प्रेगनेंसी. जो बॉडी है वो काम कर रही होती है ताकि वो सपोर्ट कर सके ग्रोइंग बेबी, इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड ब्लड प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी. दैट इज ऑल्सो द वन रीजन फॉर fatigue. And there is one more reason, that can be emotional changes, stress and sleep disturbance that ultimately contribute to tiredness. Then signs of fatigue क्या होता है, the pregnant woman experience constant tiredness, reduced energy levels, difficulty in concentrating and increased need for sleep. Now its management. To reduce fatigue and maintain good health, get adequate rest and sleep. Aim for at least 8 hours of sleep at night and take short naps if needed in the day. Eat balanced diet or maintain a balanced diet. Diet rich in proteins, iron, vitamins and minerals, और proper nutrition जो है वो provide करेगा energy needed during the pregnancy. Then light exercises. Stay physically active with light exercises जैसे walking या prenatal exercises हैं as recommended by the healthcare professionals. जो regular activity है can improve energy levels and circulations. Then manage stress.
Through relaxation techniques or emotional support from the family and friends, the stress can be reduced. So fatigue is a normal response to many changes occurring in the pregnant woman's body. So adequate rest, yeah, healthy nutrition and gentle exercise can help and maintain the energy and promote a healthy pregnancy. Now next is the frequent urination. बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो नोटिस करती हैं कि दे नीड टू पास यूरिन मोर ऑफन देन यूजुअल, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर. अब ऐसा होता क्यों है? बिकॉज जो ग्रोइंग फीटस है वो ग्रेजुअली एनलार्ज हो रहा होता है और वो प्रेशर पुट करता है ऑन द ब्लैडर, रिड्यूसिंग इट्स कैपेसिटी टू होल्ड यूरिन. और इसके साथ ही इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज द किडनीज टू प्रोड्यूस मोर यूरिन. सिम्टम्स इसमें ऐसे होते हैं कि पेशेंट फील करता है फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, passing small amount of urine repeatedly and walking up several times at night on to urinate. Then management, do not restrict fluid because it is important for hydration. Drinking enough water is important for both mother and baby. Empty bladder regularly and do not hold urine for long periods. Lean forward while urinating to empty the bladder completely, to help empty the bladder completely. Next is constipation. So constipation is a common digestive complaint among pregnant women. It occurs mainly because of the hormone progesterone, क्योंकि ये relax कर देता है the muscles of the digestive tract and slowing bowel movements. Iron supplements and reduced physical activity can also contribute to constipation. Symptoms यही होते हैं कि difficulty passing stool, hard and dry stool होता है, abdominal discomfort or bloating, and feeling of incomplete bowel emptying. So management में we can give high fiber food such as fruits, vegetables, whole grains, ये सारी चीजें हम मदर को दे सकते हैं to soften the stool. Then drink plenty of water throughout the day. Then regular physical exercises. Engage in regular physical activities such as walking or prenatal exercises, and use of stool softeners only if prescribed by a healthcare provider. So a balanced diet, rich in fiber and adequate hydration are the most effective ways to prevent and manage constipation during pregnancy. Now another digestive discomfort many pregnant women experience is the heartburn or acidity. So heartburn क्या है? Burning sensation है which is felt in chest or throat after eating. During pregnancy, hormonal changes relax कर देते हैं lower esophageal sphincter को, the valve between the stomach and the food pipe, जिसकी वजह से क्या होता है? Stomach acid can move upward, causing a burning sensation, and the growing fetus also increases pressure on the stomach. इसके symptoms ये होंगे कि mother जो होगी burning sensation feel करेगी chest में, sour taste आएगा mouth में और indigestion after meals. So in management, eat small frequent meals instead of large meals. Avoid lying down immediately after eating, and avoid spicy and oily food that triggers acidity, and sleep with the head elevated using extra pillows. Now the next one is backache. Backache is the one of the most frequent musculoskeletal complaint during pregnancy. जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, the mother's body weight increases and जो center of gravity होती है, it shifts to forward. ये सारे चेंजेस जो होते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं मदर की बैक पे, मसल पे और स्पाइन पे, विच लीड टू डिस्कम्फर्ट एंड पेन. तो मदर को लोअर बैक पेन फील होती है, मसल स्टिफनेस फील होती है एंड डिस्कम्फर्ट वेल स्टैंडिंग एंड वॉकिंग. सो टू मैनेज दैट, मदर हैड टू maintain a proper posture while standing and sitting, or she had to wear low heeled comfortable shoes for better support and use proper support with sitting. तो प्रॉपर बैक सपोर्ट का यूज कर सकती है एंड परफॉर्म जेंटल एक्सरसाइजेज और प्रीनेटल योगा आफ्टर मेडिकल अप्रूवल. तो गुड पोस्चर, सपोर्टिव फुटवेयर और रेगुलर एक्सरसाइजेज जो है इफेक्टिवली रिड्यूस करती हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड बैक पेन को. नाउ द अनदर कॉमन प्रॉब्लम दैट ऑफन अकर्स एट नाइट इज द लेग क्रैम्प्स. सो लेग क्रैम्प्स क्या है? सडन पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं लेग मसल्स की, यूजुअली अफेक्टिंग द काफ मसल्स, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड trimesters. जो exact cause है that is not understood, but जो factors such as calcium और magnesium deficiency है,
या पुअर सर्कुलेशन है एंड प्रेशर ऑन नर्व्स फ्रॉम द ग्रोइंग यूट्रस मे कंट्रीब्यूट टू दिस. सो द सिम्टम्स, मदर को सडन शार्प पेन होएगी काफ मसल्स में, मसल टाइटनेस फील होएगी और मदर को पेन होएगी रात में काफ मसल्स में. सो टू मैनेज दिस, स्ट्रेच लेग्स बिफोर स्लीपिंग. तो मदर को हम हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करने के लिए बोल सकते हैं, जेंटल मसाज कर सकते हैं द अफेक्टेड मसल्स जो हैं. एंड एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक, हम इंश्योर करेंगे कि मदर जो है एडिक्वेट कैल्शियम जो है वो ले रही है अपनी डाइट में और सप्लीमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ प्रोफेशनल. एंड ड्यूरिंग क्रैम्प्स, जो मदर को बोलना है कि पुल द टोज अपवर्ड टुवर्ड्स द नीज, डॉर्सीफ्लेक्शन करनी है टू रिलैक्स द मसल्स. सो रेगुलर स्ट्रेचिंग और एडिक्वेट मिनरल इनटेक जो है वो प्रिवेंट कर सकता है और रिलीव कर सकता है लेग क्रैम्प्स को. नाउ द नेक्स्ट इज वेरिकोज वेन्स. सो वेरिकोज वेन्स क्या है? Are the enlarged, swollen and twisted veins usually seen in the legs, and they occur because pregnancy increases blood volume and the growing uterus put pressure on pelvic veins, or slowing blood return from the legs cause the varicose veins. इसमें क्या है? visible enlarged veins हमें दिखेंगी, leg heaviness होगी मदर को, और aching और discomfort after standing. To manage this, मदर को बोलना है टू अवॉइड prolonged standing, elevate legs when resting ताकि सर्कुलेशन इंप्रूव हो सके, एंड वेयर सपोर्ट स्टॉकिंग्स जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आती है इफ एडवाइज्ड बाय द हेल्थ प्रोफेशनल, एंड अवॉइड क्रॉस लैगिंग when sitting because it interrupts the blood supply. So improving blood circulation and regular reducing pressure on leg veins can help prevent worsening of varicose veins. So the next is edema, that is swelling of feet or ankles. एडिमा रेफर करता है टू स्वेलिंग पर्टिकुलरली जो होती है फीट पे, एंकल्स पे, समटाइम्स हैंड्स पे भी होती है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बॉडी है वो रिटेन करती है फ्लूइड को, एंड प्रेशर फ्रॉम द ग्रोइंग यूट्रस फ्लो कर देता है ब्लड फ्लो को फ्रॉम द लोअर लिम्स विच कॉज फ्लूइड एक्युमुलेशन और एडिमा हमें देखने को मिलता है. इसमें सिम्टम्स हैं कि मदर के या जो पेशेंट है उसके हमें फीट्स और एंकल्स स्वोलन मिलेंगे, टाइटनेस इन शूज, माइल्ड डिस्कम्फर्ट होगा आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग. टू मैनेज दिस, we can elevate the legs whenever possible and avoid standing for the long periods, and wear comfortable footwears. Reduce करना है excessive salt intake को while maintaining a balanced diet. So mild swelling is usually normal during pregnancy and can be controlled through rest and proper circulation promoting measures. Now, breast tenderness. ब्रेस्ट टेंडरनेस क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी. हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट टिश्यूज को ताकि वो ग्रो हो और प्रिपेयर हो फॉर द मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और इसी की वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस हमें फील होती है. सिम्टम्स क्या है? ब्रेस्ट सोरनेस, इंक्रीज सेंसिटिविटी रहेगी और फीलिंग ऑफ फुलनेस और हैवीनेस. टू मैनेज दिस, वी एडवाइज मदर टू वेयर वेल फिटेड सपोर्टेड ब्रा, maintain hygiene, proper breast hygiene, and avoid unnecessary pressure, trauma, or injury to the breast. So breast tenderness is a normal sign that the body is preparing for breastfeeding and usually improves over time. Now the next is vaginal discharge, that is leukorrhea. ये increase होता है due to the estrogen and जो blood flow increase हुआ होता है. इसकी मैनेजमेंट क्या है? टू मेंटेन पेरिनियल हाइजीन ताकि इन्फेक्शन ना हो, यूज कॉटन अंडरवेयर्स ताकि इरिटेशन ना हो, एंड टू अवॉइड ब्लीचिंग. सो नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए भी होती है क्योंकि जो यूट्रस है वो इनलार्ज हो रहा होता है और डायफ्राम को प्रेस करता है, तो लंग्स को एडिक्वेट स्पेस नहीं मिल पाता है टू एक्सपैंड. सो दैट्स व्हाई मदर फील शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. टू मैनेज दैट, वी हैव टू मेंटेन अ गुड पोस्चर. मदर को बोलना है प्रॉप्ड अप विद पिल्लोज, अपने हेड को प्रॉपर प्रॉप्ड अप रखना है व्हाइल स्लीपिंग. अवॉइड स्टर्नस एक्टिविटीज, उससे क्या होगा? जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो डिक्रीज रहेगी अगर नॉर्मल एक्टिविटीज करेगी, स्टर्नस एक्टिविटी नहीं करेगी. देन नेक्स्ट इज इंसोम्निया. हार्मोनल चेंजेस
और डिस्कम्फर्ट की वजह से होता है क्योंकि बैक पेन हो रही होती है और अदर माइनर एलिमेंट्स होती हैं, और कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी इंसोम्निया होता है। इसको मैनेज करने के लिए हमने एस्टेब्लिश करना है रेगुलर स्लीप रूटीन। मदर को बोलना है कि 8 घंटे की स्लीप लेनी है, और इफ पॉसिबल और इफ शी नीड्स तो दिन में नैप्स ले सकती है। यूज सपोर्टिव विद पिलोज व्हाइल स्लीपिंग अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर, और अवॉइड करना है कैफीन बिफोर द बेड टाइम क्योंकि वो ऑल्टर करेगा उसकी स्लीप। नेक्स्ट आर हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स का एक कॉज है, एक माइनर डिस्कम्फर्ट जो मदर को हो रहा था, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। उसकी वजह से मदर को हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, और पेल्विक प्रेशर जो होता है ड्यू टू द ग्रोइंग बेबी इंक्रीज हो जाता है, वो भी एक रीजन है फॉर हेमोरॉइड्स। इसके मैनेजमेंट के लिए हमने सबसे पहले प्रिवेंट करनी है कॉन्स्टिपेशन, तो हमने उसको फाइबर रिच डाइट देनी है, बैलेंस डाइट देनी है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। देन सिट्स बाथ दे सकते हैं टू रिलीव द पेन और डिस्कम्फर्ट, और जो टेंडरनेस है उसको रिलीव करने के लिए, एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्ट्रेनिंग while passing the stool. So journal advices में हम मदर को बोल सकते हैं to go for the regular antenatal checkups, balanced diet and hydration के लिए, moderate exercises के लिए, emotional support and education from the family as well as from the health providers. Thank you for watching. For more videos, please like, subscribe and share.